So, hey guys, once again I am back to my channel, and today we are continuing our previous question which we had done in our classes, and today I am going to complete this exercise 1.1. Okay guys, so we are starting from question 11. I hope you have done all the questions which I have given you as the homework, or if you didn't get that answers or solution, or if you want the solution, then comment me in the chat box and I will upload the solutions of the remaining questions which I have given you the homework. Okay guys, so let's begin. So guys, we are going to do 11th question. 11th question I am going to read and you have to see the question from your book. So guys, let's start. Show that the relation R in the set A of a point in a plane given by R is equals to P, Q such that the distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. Guys, so first of all, this question is divided into two parts. The first part is I have already told you, and we have to prove that this relation is an equivalence relation. Okay guys? And the second part says that show that the set of all points related to point P is not equals to 0, 0 is the circle passing through the point P with the origin as the center. So guys, in second part we have to prove that the point P is not the center of the circle. We have to prove that the circle is passing through the point P. Okay guys, so let's begin our first part of this question, and second part of the question I will explain you how to do that one, and you will have to do at your home, okay, and solve it by yourself. Okay guys, so let's start. First of all, we are going to prove equivalence relation. Okay, equivalence relation, we will assume that let P x1, y1 and q x2, y2 and O as a center of the circle. Okay guys, 0, 0 with coordinate 0, 0 be the origin. Okay guys, let's start. Okay, first of all we are going to prove reflexivity. Now listen here guys, we used to write like that: for any p x, y1 x1, y1 belongs to A, कैपिटल ए एक सेट है जिस पे रिलेशन आर डिफाइन हो रही है. ठीक है गाइस, सो अब क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी. अब ये बताओ, ये दो पॉइंट है, इन दोनों बीच का डिस्टेंस पी है. मैं बोलूँगा इसका डिस्टेंस इसके बराबर होगा. ऑब्वियसली यार होना ही चाहिए, वो तो हो गई. तो गाइस मैं क्या लगाऊंगा? इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, पी ओ इज इक्वल टू पी ओ. ठीक है, या तो ये मतलब पी ओ ये कैसे पॉइंट ले लिए होंगे ना, मतलब मैंने लिए हैं ऐसे पी ओ, ये डिस्टेंस एक्स से इक्वल होगा, वही लिखा है, तो उसमें अपन लगाया ना डिस्टेंस फॉर्मूला. और अगर कोऑर्डिनेट इक्वल आएंगे तो ग्रुप हो गया. ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन, ये देखो ये ऐसा है. ठीक है, अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया अंडर रूट एक्स. ये तो अपना सॉल्व करने के बाद ये है x1 square plus y1 square equals to x1 square plus y1 square. So we can say that P, P belongs to capital R. Therefore, R is a reflexive relation. Clear? Now we are going to do symmetry. Let P, Q belongs to AB such that distance of the point from the P is same as the distance of the point Q from the origin. लिखेंगे अपन डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड होगा. अपन को पता है इसका सेंटर क्या माना अपन ने, 0, 0. ठीक है, तो ये 0, 0 अपन को ये मिला. ठीक है, ये अब गाइस क्या करना है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे. ठीक है, नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये प्रूफ हो गया. अब वापस इसी को डिस्टेंस फॉर्मूला के रूप दे देंगे, तो अपन क्या बोल सकते हैं? क्यू ओ इज इक्वल टू पी ओ. सो अपन क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन. तो अपन क्या बोल सकते हैं? क्यू, पी बिलोंग्स टू रिलेशन आर. आई थिंक यू आर तुमने देखा नहीं. ओके, नो प्रॉब्लम. Distance of the point Q from the origin is same as the distance of the point P from the origin. We can say that Q, P belongs to R. Now guys, let me turn my page. So अपन बोल सकते हैं R symmetrical. Transitivity prove करेंगे अब. First of all guys, we are assuming that
P, let P, Q, T belongs to capital A. I think यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ P, Q, T belongs to capital A. B says that P, Q belongs to R and Q, T belongs to R. So we can say that PO is equals to QO and QO is equals to TO. If we know if any distance is equal to another distance, मैं बताता हूँ हिंदी में. देखो जैसे ये है PO और ये QO, तो ये हो गया अपना TO. ये Q आएगा यहाँ पे, ठीक है. ये Q, ये O. मैं बोल रहा हूँ PQ इज इक्वल टू Q और QO इज इक्वल टू QT. अब अपन बोल सकते हैं ना कि PO इज इक्वल टू TO, सॉरी PQ इज इक्वल टू TO, PQ इज इक्वल टू TO. ओके, सो अपन कह सकते हैं P, Q बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन है, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब सुनो भाई, जो सेकंड पार्ट है उसको प्रूव करने का तरीका बता देता हूँ. उसको प्रूव करना है तो कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना. और अगर आपको ये इक्वेशन मिल जाए तो आप कह सकते हो कि ये पॉइंट P सेंटर ऑफ द सर्कल से नहीं, सर्कल पॉइंट P से पास कर रहा है. क्यों? ये एक अपनी जनरल इक्वेशन होती है सर्कल्स की, ये वाली इक्वेशन आना चाहिए डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद. यहाँ तक तो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है. यहाँ से ये आपको होमवर्क है, आपको करना है, ठीक है गाइस. तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Now our 12 question is that show that the relation are defined in the set A of all triangles as R1. I am assuming R1, but in the book it is written R only, because guys you are considering R as a real number sometimes. For मिसअंडरस्टैंड नहीं हो इसलिए मैं आपको ये R1 मान रहा हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो आगे, ठीक है. सो अपन प्रूव करना है T1, T2. B says that T1 is similar to T2. We have to prove, sorry not prove, it is given, it is a relation, ठीक है. इसमें अपन को प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है. इसमें अभी दो पार्ट है, पहला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ. देखो, फॉर एनी T1, ट्राइंगल T1 बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है. अपन जानते हैं कि एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ. तो अपन बोल सकते हैं ट्राइंगल T1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल T1. ये T1 है, ट्राइंगल T1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल T1. सो वी कैन से दैट T1, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन R1. Okay guys, now there is no confusion of real numbers. Okay guys, it is clear because I have already assumed this R1. If I am using it R, you might be sometimes thinking that this is a real number, it's belonging to real number. So we can say that relation R1 is a reflexive relation. Symmetry, no problem. Let T1, triangle T2 belongs to capital A, set capital A. P says that T1, T2 belongs to R1. It is already given in the question. So we can say that triangle T1 is similar to triangle T2. अब कुछ नहीं, इसको ऐसे कर देंगे क्या, ट्राइंगल T2 सिमिलर टू, अगर T1 T2 से सिमिलर तो T2 T1 से नहीं हो सकता. क्या होता है ना, 9th क्लास में पढ़ा नहीं पढ़ने बस. तो T2, T1 belongs to relation R1. So we can say that R is a symmetrical relation. Now it's time to prove transitivity. Okay guys, so we are considering let T1, let triangle T1, triangle T2 and triangle T3 belongs to capital A. B such that. So अपन बोल सकते हैं triangle T1 is similar to triangle T2 and triangle T2 is similar to triangle T3. So इक्वेशन 1 बनाकर 2 बनाकर बोल सकते हैं ट्राइंगल T1 is similar to triangle T3. ये तो बेसिक्स हैं, ये आप सब लोग जानते हो, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं घुस रहा हूँ इसमें. इसको मैं लिख सकता हूँ T1, T3 belongs to relation R1. Okay, it is a transitive. So we can say that hence it is equivalence relation. अब पूरा आप लिख लेना, ठीक है, मैं लिख देता हूँ बस. अब पार्ट 2 पे जाते हैं. पार्ट 2 पे क्या करना है बता दूँ. उन्होंने गिवन दिया है ट्राइंगल, इसकी साइड ये है T2 है, इसकी साइड ये है
3 4 5 T1 की है, 5 12 13 12 है, गलती से अगर कुछ और मैं समझ लेना, ठीक है, दोबारा लिखता हूँ इसको भी। 5 12 13 और T3 है 6 8 10। ओके, सो अपन को अब बताना है कि कौन सा ट्राइंगल आपस में रिलेटेड है। जैसा कि मुझे पता है, अगर अपन को रिलेटेड चाहिए मतलब सिमिलर हो, अपन देखेंगे पहले इनका रेशियो कितना आ रहा है। पहले तो T1 T2 का रेशियो देखूंगा मैं। T1 T2 का रेशियो कितना आ रहा है देखते हैं। 3/5 नॉट इक्वल्स टू 4/12 दैट इज 1/3 एंड 5/13 के भी बराबर नहीं, रेशियो सेम नहीं। अब इन दोनों का देखेंगे, इन दोनों का ये आएगा कुछ, तो क्या हुआ, रेशियो सेम आ रहा है तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो बोल सकते हैं ट्राइंगल T1 सिमिलर टू ट्राइंगल T2। यही बताना था सेकंड पार्ट में। अब अपन आते हैं इस क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ओके गाइस, this is our question number 13. So question number 13 I will read and you have to see in your book. So question 13 says that the relation R, show that the relation R defined on the set A. Actually guys, it is not a question number 13, it is a 14 and 13 is the homework for you, and if you are not getting that one, then I will upload the solution of that question on my channel after completing the relation and function. Okay, all the homework questions will be uploaded after completing the chapter. Okay guys, so let's start. So reflexibility, sorry, question I will not read fully. Okay, let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R is equals to L1, L2 be such that L1 is parallel to L2, and we have to prove that it is a what? It is a equivalence relation. That R is a equivalence relation. Prove करना है equivalence relation. So guys, reflexivity. We know for any line L1 belongs to capital A. It is a set A. Okay, the relation is defined on this set A. Okay. Now we know every line is parallel to itself, so we can say that L1 is parallel to L2. Okay, now we can say that it is a reflexive relation. So let's talk about symmetry. We know L1 is parallel to L2, then we can say that L2 is parallel to L1 and it is a given condition. Okay, it is given in the question. Okay guys, then we can say that L2 comma L1 pair belongs to capital R, the relation capital R, then it is a symmetric relation. Now we come to transitivity. Transitivity is like that, let L1, L2, L3 belongs to capital A be such that L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. This all L's are capital L, but while I am writing these notes now, by mistake I have written there small l, so don't consider it, just manage. Okay, then we can say that L1 is parallel. Guys, listen here. It is this line, this is a L1 line, sorry, capital L1 is parallel to capital L2, then L3. L2 is parallel to L3, we can say that L1 is parallel to L3. Similarly, here we can use the same concept and we can say that L1, L3 belongs to relation R. Therefore, R is a transitive and R is a equivalence relation. And once again guys, its second part is homework for you, equivalence relation. Okay, I am not writing here. Okay, second part is homework, and our exercise 1.1 is almost completed, and 15 and 16 are choose the correct answers, and the 15 questions answer will be, you have to think, because it's a very easy question, and 16 is also an easy question. Now guys, after uploading this video, I will upload the video of the examples of relation. Okay guys, and the miscellaneous exercise we will do after completing both relation and function separately. Okay guys, so thanks for watching the video, and I hope you will like my video, and if you find my method of teaching good, then share, subscribe with your friends.